Hello guys, a very good afternoon to you. Welcome to Gradeup. I am Shailinder Singh and the topic that we have got today is somewhat different. That is, it is not related to the Indian freedom struggle as such. Today the topic is Indigo Revolt of 1860. एक revolt करेंगे आज and this is like a very important topic. We will talk about how did this revolt begin, क्या कारण थे रिवोल्ट शुरुआत होने के, what was the course of developments, what is the significance of this revolt. But before that, let's take up a previous year question. Let's see whether you are in a position to handle this or not. And you see, this question has been asked by UPSC this year itself. 2020 में ही UPSC CSE के प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन. And let's see what is the question. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of, so there are four options. Peasant resistance to the oppressive conduct of planters, is unprofitability in the world market because of the new inventions, national leaders opposition to the cultivation of indigo, and the fourth is government control over the planters. Please read the question very carefully. This is a very tricky question, by the way. If you see the options, it's not very black and white. तो अगर आपको ढंग से अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक का, एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, then you might fall in the trap. So just be careful and let's see how many of you can answer this. Shruti, good afternoon. Kush, welcome to the class. And even if like you don't have much idea, just make a guess so that at least you could try. All right. आयुषी, ये जो क्लास है वो दोनों लैंग्वेजेस में होगी, बायलिंगुअल क्लास होगी, इंग्लिश एंड हिंदी. ऑलराइट. एंड एज सच आपका कहीं पे डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, इफ यू आर लाइक नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यू कैन आस्क मी, सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू. ऑलराइट. ओके, सो आई सी सम answers. Okay, so before we discuss the answer, let's look at the course of the events. Let's talk about the revolt itself, and then at the end we will see the answer to this. We will discuss the answer, and also हम एक और previous question लेंगे, additional question लेंगे. So we'll be doing two questions, right? So and towards the end we'll be taking up another question apart from giving the answer to this one. All right. All right, Shruti saying C, Kushit saying B. Anybody else? Okay, so guys, जो peasant revolts हैं या peasant movements हैं, you see, even before the colonial period, they were like quite common, and it's not that they did not happen. So be it a small scale or at a somewhat larger scale, they were there. But due to the fundamental changes that the British brought about as a result of the British colonialism in the country, जो changes हुए structure में, जो administrative structure है, judicial structure है, revenue structure है, taxation system है, जो land revenue tenures वगैरह हैं, ये सब जो changes British ने introduce किए country में धीरे धीरे, they resulted in a very severe sort of oppression of the peasants. So be it the zamindari system or the permanent settlement system in Bengal, then we have the Rayatwari system also, Mehlwari system. So all these systems, and apart from the administrative changes, it was actually very oppressing for the peasants. Either the zamindar was oppressing them, or the moneylender who was a part and parcel of colonial rule, because he had the backing of the administration, police, judiciary. He was taking away the land of the poor peasant of the country. और अल्टीमेटली जिन एरियाज में जमींदार नहीं भी है, फॉर एग्जांपल रेयतवारी एरियाज में, डेक्कन में जो और मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे जो अल्टीमेट जमींदार है ब्रिटिश, वो भी अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेजेंट्स को. सो द पेजेंट का जो कंडीशन था इस टाइम पे, that became very very miserable with the passage of time, and this is the reason why we witness
frequent peasant revolts during the British time. इनफैक्ट एक नहीं कई सारे रिवोल्ट्स और कई बड़े बड़े लेवल पे रिवोल्ट्स हुए हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन सच इंपॉर्टेंट रिवोल्ट विच हैपेंस टू बाय द वे द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मैसिव ऑफ द रिवोल्ट्स ड्यूरिंग दिस टाइम इन द 19th century, which is the Indigo Revolt. सो जो असेंशियली जो चेंजेस हैं, जो फंडामेंटल चेंजेस हैं जो सिस्टम में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एज ए सेड जुडिशरी में जो चेंजेस किए, या जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिसिंग, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो पेजेंट्स हैं और इनफैक्ट जो ट्राइबल्स हैं, देयर वर वेरी फ्रीक्वेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑल्सो. दे फाउंड दैट देयर इज नोबडी टू लिसन टू देम. And in fact, the peasant of India has had a lot of patience throughout the history. You see, he is like very content with do waqt ki roti or जो arrangement है. Even though he himself was paying taxes and he was making others feed and he was providing taxes to the state and making others rich, but himself was by and large okay with his condition. But when things came to such a pass that the peasants could take it no more, they revolted. When the grievance system is not there is nobody to listen to them, they had no option but to take up the banner of revolt. And it is this revolt that we talk about, one such important revolt, which is the Indigo Revolt of 1859-60, which was against the British planters. British planters जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनके खिलाफ ये बगावत थी. Okay, we have some more students chipping in and answering the question that I've asked. Okay, Tariq says B, Ayushi says C. All right, so just hang on, we will see what is the right answer. और आपके लिए एक और question है by the way towards the end, so I'll see whether you can also handle that or not. All right, so let's do the background of the revolt. क्या theme था, क्या context था जिसमें ये revolt develop हुआ. Now you see, indigo is not something new to the country, and during this time, indigo was grown in India for a very long time. Ancient time में भी indigo grow किया करते थे, and as such, Indians used to trade with the Greco-Roman empires, जो उस world में Western world पे trade किया करते थे, and there was a lot of demand of indigo that was produced in India. The finest quality of indigo that was produced in the country. And if you see and observe, the name itself says indigo. That means जो root है, that is India. All right. So जो Greek है वो इसको जो नील जिसको हिंदी में बोलते हैं इंडिगो को, they used to call it Indicon, means Indian. Gradually it got anglicized into indigo. So you see इंडिया का कितना एक डोमिनेंस रहा होगा, कितना एक जो लेगेसी है इंडिगो ग्रो करने में. फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द इंडिगो डाई इन द वर्ल्ड दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. नाउ देयर वाज अ चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ न्यू सी रूट्स टू द कंट्री. नाउ यू सी वास्को डी गामा केम टू द कंट्री इन 1498. सी रूट से डायरेक्टली इंडिया पहुंचा कैलिकट में. And this was a time when there was this increasing contact of Indians with the Europeans, and there was gradual demand that the Europe saw, और ज़्यादा demand बढ़ने लगी. But it was only with the industrial revolution when it witnessed this boom. Boom कब आया? Industrial revolution में, because we have a lot of textile manufacturing in the factories of Lancashire, Manchester, etc. in Britain. और वहां पे जो कॉटन टेक्सटाइल में जो नील है, इंडिगो है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया, बिकॉज नेचुरली इट वाज यूज्ड फॉर डाइंग. एंड यू सी जो इंडिगो है, इट इज अ काइंड ऑफ वेरी जो ऑलराउंडर टाइप ऑफ कलर विच कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर कलरिंग कॉटन टेक्सटाइल्स बट ऑल्सो सिल्क, लिनन एटसेट्रा. तो काफी सारी वराइटी के जो टेक्सटाइल्स हैं वो इससे डाई किए जा सकते हैं. And when there was this demand that was created as a result of the boom in Britain, naturally you see what would happen. India में भी उसका reflection होगा. India में भी जो supplier है, demand बढ़ेगा cultivation का, because it was very lucrative. because demand अगर किसी चीज की है तो naturally यहाँ पे फिर produce करेंगे.
वहां पे ज्यादा कल्टिवेशन होगा. एंड टू एनकरेज दिस कल्टिवेशन यू सी द यूरोपियंस चिप्ड इन and the cultivation in Bengal, and we will be talking about Bengal only today, that began as early as 1777 at a commercial level to satisfy the needs of the factories of Britain and Europe. And from the beginning itself it was the European planters who would monopolize this. जो monopolization है जो cultivation का, that was done by the European planters. दो तरीके के सिस्टम होते थे इस टाइम पे जो इंडिगो प्लांटिंग के और प्लांटेशन के. वन इज द निज सिस्टम एंड सेकंड इज द रैयती सिस्टम. तो जो निज सिस्टम है इसमें तो डायरेक्टली जो प्लांटर्स है ही वुड हैव दिस ओन पार्सल ऑफ लैंड और ही कुड टेक अ लैंड ऑन लीज एंड डायरेक्टली हायर्ड लेबर की हेल्प से वो इंडिगो प्लांटेशन और जो डाई है वो मैन्युफैक्चर कर लेगा. पहले प्लांटेशन क्रॉप होगा, उसको प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में दैट विल हैपन. सो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है. इश्यू है इसमें रैयती सिस्टम में, जिसमें जो पेजेंट्स हैं ही वुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद देम, ऑफन वेरी फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. उनको पुश करेगा, कंपेल करेगा और जो उनका रेम्यूनरेशन है, उनका राइटफुल रेम्यूनरेशन वो भी नहीं देगा. So it was this system actually that was very exploitative for the peasants and which ultimately led to this revolt of 1859-1860. Now you see, to induce the riots, जो riots जो peasants हैं, जिनको रैयत जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में riot बोलते हैं, peasants हैं, उनको इंड्यूस करने के लिए कि आप इंडिगो ग्रो कीजिए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करते थे जिसमें ये ना एडवांस दिया करते थे. दे यूज्ड टू एडवांस सम लोन्स एंड व्हेन दे यूज्ड टू एडवांस दीज लोन्स दे वर गिवन ऑन अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. और इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट को भी फ्रॉडुलेंट तरीके से कुछ उसमें चेंजेस करके और गिमिक्री करके, चीटिंग करके, ultimately that used to lead to this trapping of the poor peasant in this vicious cycle. एक बार लोन ले तो लिया लेकिन उसको रीपे नहीं कर पाए क्योंकि जो प्लांटर है उसके फ्रॉडुलेंट मीन्स हैं, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बिकॉज बेचारा वो तो इलिटरेट है, राइट. सो उसको तो नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देगा प्लांटर. एंड इवन द पुलिस एंड द कोर्ट सिस्टम इज देयर टू सपोर्ट द केस ऑफ द प्लांटर्स because contract में तो वही लिखा हुआ है. Alright, so it is this system which was very exploitative for the peasant, and whatever was due to the peasant after growing of the crop, even that was not given to the peasant. And as such जो market price थी, ultimately जब grow करता था peasant और जो indigo crop थी planter को देता था, तो उसका जो rightful remuneration था वो भी नहीं मिलता था उसको. And whenever he tried to grow other remunerative commercial crops like paddy. Paddy का मार्केट में भी अच्छा डिमांड था, खुद के कंजप्शन के लिए भी यूज कर सकता था. यू सी, इंडिगो का खुद का सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं है ना. इट इज नॉट अ स्टेबल क्रॉप, राइट. यू कांट हैव इट. अगर आपके घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या करोगे? आई मीन यू हैव नो अदर ऑप्शन. पैसा भी प्लांटर नहीं पे कर रहा है ढंग से एंड उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव करते जा रहा है, इनफैक्ट थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स एंड मेथड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अगर पैडी भी कल्टिवेट करता, सो ही कुड हैव लाइक मच मोर रेम्यूनरेशन फ्रॉम द मार्केट एट मार्केट प्राइस. अपने परिवार के लिए भी दैट वुड हैव बीन लाइक वेरी sustaining for him. He could have it used as a staple crop, as a food crop. But the planters, they maintain these band of lathiyals. In case the peasant refused to grow indigo और अपने तरीके से, मनमानी तरीके से, चाहे पैडी है या कोई भी XYZ क्रॉप ग्रो करना चाहता है, the indigo planters and most of them, an overwhelming majority, they were the British. They used to maintain these bands of armed retainers who were called lathiyals, and they used to go to the farmers' place. वहाँ पे उनको या तो उनकी पिटाई कर देते थे violently, या तो उनके जो बीवी बच्चे हैं, they used to attack them,
and also they used to destroy their crops, whatever crops they grew, and also take their cattle. So, इस तरीके से एक जो चारों तरीके से जो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन होता था पेजेंट के ऊपर. एंड इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो मैजिस्ट्रेट होते थे, जो जजेस होते थे, दे यूज्ड टू सपोर्ट द केस ऑफ द planters. And why it is so? Because ultimately they belong to the same country, they belong to the same racial stock, same culture, same people, and same purpose for the colonial exploitation of the country. So they were hand in gloves with the administrative system, including judiciary, and they hunted together, they dined together, they were very good friends, they were family friends, relatives, brothers, sisters. इस तरीके से उनका नेक्सस हुआ करता था. सो नाउ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है पेजेंट के पास. एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस? accumulated discontentment, anger, which would ultimately boil over one day. And it happened. It did happen in 1859, in the autumn of 1859, that is August 1859. And where it began? It began in the Nadia district in West Bengal today. This is the United Bengal that we are talking about. But आज की डेट पे जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, this is in West Bengal. So यहाँ पे शुरुआत कर दी दो ब्रदर्स ने. इनका नाम था दिगंबर बिस्वास एंड विष्णु बिस्वास. They were the natives of Govindpur village. So there was a Govindpur village there in Nadia district, and they were also the ex-employees of indigo planters, and they knew that the system was very exploitative, किस तरीके से ऑपरेट किया हुआ है. And as such they were more informed, they were more aware, and they refused to grow the indigo crop in their village. और बाकी villages को भी बोला कि आप भी इसको बंद कर दीजिए grow करना. And what the indigo planter did was, it sent his band of armed retainers, लठियाल भेज दिए, to attack on the villagers, including these brothers. And when this happened, naturally they also launched a counter attack. They also attacked these armed retainers, लठियाल, with whatever they could have at hand. So be it the slingshots, or be it the spears or bows, arrows, or जो भी, even pots and pans. So जो भी अगर हाथ में आया, so they also counter attacked. And when this happened, it spread to a large part of Bengal very, very rapidly. Now there is no looking back of the things, and it is just spreading like a wildfire across a lot of districts of Bengal. So I'll just zoom the map for you so that you can have this better understanding as to what was the territorial extent, किस लेवल पे ये जो रिवोल्ट है ये फैला था. अगर आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है, सो यू कैन सी दैट ये जो बंगाल का मैप है इस टाइम पे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स some territories of Bangladesh of today, because Bengal was united during this time, you already know this. And these are the areas of revolt. Now the areas that have been shaded in blue, so Nadia district से spread हुआ, शुरुआत हुई गोविंदपुर village से, as I just mentioned, दो भाइयों ने शुरुआत की थी revolt की. And within a very short time, you see everybody was so aggrieved with this exploitative system, everybody was so done with the system that it spread like a rapid wildfire. And you see it encompassed 24 Parganas, Jessore and Khulna. This is in Bangladesh today. Decca, Dhaka जिसको बोलते हैं, that is in Bangladesh today. Pabna, in Bangladesh. So all these areas, Rajshahi, Bangladesh today, Malda, India. So यहाँ पे इन जो pockets में जहाँ पे ये exploitative system था, यहाँ पे revolt rapidly spread कर गया. And now there was no looking back, which resulted into the attacks on the indigo planters, burning of indigo factory जहां पे प्रोसेसिंग होती थी. तो एक तो है खेत जहां पे इंडिगो ग्रो करते हैं, राइट, इट्स अ प्लांट बेसिकली. और जो प्लांट का जो लीफ है, लीफ से इंडिगो बनता है, जो डाई बनती है नेचुरली, अल्टीमेटली दैट इज मेड ऑफ द लीव्स ऑफ द इंडिगो प्लांट. उसको फर्मेंटेशन होता है, दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू दैट डाई. And where it is processed, that is processed in the rural areas during this time. Mofussil time जिसको बोलते हैं, Mofussil areas जिसको बोलते थे इस टाइम पे. So Mofussil areas means rural areas.
तो यहाँ पे ये फैक्ट्रीज हुआ करती थी इंडिगो प्लांटर्स की, और जो चीप लेबर था यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ देम दे यूज्ड टू प्रोसेस द इंडिगो प्लांट इनटू इंडिगो डाई, नेचुरल डाई। तो इनके जो फैक्ट्रीज में अटैक हुए, इंडिगो प्लांटर्स में अटैक हुए, पुलिस की हेल्प ली, तो पुलिस में लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, एंड द पुलिस ऑल्सो एंड द इंडिगो प्लांटर्स ऑल्सो दे ऑल्सो लॉन्च दिस सिस्टमैटिक campaign of oppressing and crushing the revolt of the peasant with the help of the police, with the help of the armed retainers, lathiyals. So इस तरीके से जो चीजें हैं वो पैन आउट हुई, बट नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इंडिगो पेजेंट्स थे दे ऑल्सो टुक लीगल हेल्प. इनफैक्ट आफ्टर दिस इनिशियल पार्ट ऑफ वायलेंस बाद में इनका जो एम्फोसिस रहा दैट वाज लीगल एक्शन. So इन्होंने अपने को ऑर्गेनाइज किया with the help of the leaders, and leaders I've already talked about. In fact, another important leader was Qadar Mullah of Pabna district, and another was Rafiq Mondal of Malda district. So ये भी important leaders थे. तो जब इन्होंने लोगों को गैल्वनाइज किया, इन्होंने बोला कि आप जो लीगल एक रूट है उसको लीजिए, बिकॉज व्हेन विल हैव द यूनाइटेड रेजिस्टेंस, व्हेन विल पूल इन द मनी, सब कंट्रीब्यूशन करेंगे और उससे फिर हम फाइट करेंगे लीगल तरीके से. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वाज डन विच वॉज क्वाइट न्यू, बिकॉज यू सी इस टाइम तक जो इंडियन पेजेंट है उसको नहीं पता है लीगल मशीनरी को कैसे navigate करना है, because it was very difficult. They were mostly illiterate people, and उनको ये जो चीजें बहुत एक स्कैरी टाइप की लगती थी कि लीगल तरीके से क्या करना है, कैसे करना है. सो दिस वाज एक्चुअली some basic form of organization which came into the fore for the first time, and in this legal resistance, collective legal resistance, they were also backed by Bengali intelligentsia, Muslims and the missionaries. Now this is very important that even missionaries who were active at the local level, उन्होंने भी मूवमेंट को सपोर्ट किया, बिकॉज मिशनरीज एक्चुअली वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं मिशनरीज. उनको पता था कि ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, एंड एज सच द मिशनरीज ऑल्सो लेंड देयर वेट टू द रेजिस्टेंस ऑफ दीज पीपल. बंगाली इंटेलिजेंसिया है, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड वी विल सी दैट हाउ इवन प्रेस एंड जो जर्नल्स वगैरह इस टाइम पे और जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट दैट वाज एग्जिस्टिंग अमंग्स द पेजेंट बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन बाय द प्लांटर्स. एंड व्हेन ऑल दैट हैपेंड, द इंडिगो प्लांटर्स दे कुड नॉट रेजिस्ट द कलेक्टिव माइट ऑफ द पेजेंट. उनको पता चल गया कि जो एक यूनिटी में बात होती है, दैट वाज समथिंग दैट दे फेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. इससे पहले यू सी दिस इज समथिंग क्वाइट न्यू, इट वोंट हैपन दिस वे. जो नए जो तरीके इन्होंने अपनाए और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, एंड द इंडिगो कमीशन दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल्सो हेल्ड द प्लांटर्स टू बी गिल्टी. That also helped the planters to be guilty. Now the British government instituted this commission to look into whether it was actually happening on the ground, this sort of exploitation or not. And this Indigo Commission also brutally criticized the indigo planters for compelling the peasants to grow indigo, और जितनी भी exploitative जो system है वो सामने लेके आए. And the British government also issued a notification कि कोई भी इंडिगो प्लांटर फोर्सिबली कोअर्सिवली किसी पेजेंट को इंड्यूस नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप इंडिगो को प्लांट कीजिए. यहां पे हिंदू पैट्रियट, दिस वाज अ न्यूज़पेपर. यहाँ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस न्यूज़पेपर में. इस न्यूज़पेपर ने टू स्प्रेड द काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट दैट द पेजेंट्स हैड ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड ये जो
इंटेलिजेंसिया है और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल्स है बंगाल के, जर्नलिस्ट थे और जो बाकी जो लीडर्स थे, दे एक्चुअली सपोर्टेड इट. सो ये जो एक कलेक्टिव जो एफर्ट है ना, दैट वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज व्हाई इट वाज by and large successful, because even the British government, it did not repress the peasant revolt as compared to the other revolts that it treated. Because you see, before that we have Santhal revolt और कई सारे revolts हमने देखे हैं peasant revolt. The British government used to crush with an iron fist, but due to the peasants they ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू दिस लीगल वे. एक तो लीगल तरीके से लीगल मशीनरी का यूज कर रहे हैं, और दूसरा रीजन ये है दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉ दैट द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, इवन द मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, द ब्रिटिश देमसेल्व्स, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द peasants cause, and that is why the British government was sort of more favorable, more amenable to the demands. And by the end of 1860 जितना भी कल्टीवेशन होता था इंडिगो का, वहां पे वाइप आउट हो गया बंगाल से. इन सब की दुकानें बंद हो गई, जो इंडिगो प्लांटर्स थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एंड दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस. इनफैक्ट there was another very important development with regard to the cultivation of indigo. Why it was so? Because there was something very groundbreaking that was happening in Germany. In the second half of the 19th century, Germany was rapidly evolving as a great industrial power, and it was challenging the supremacy of Great Britain. We will see how it ultimately challenged the supremacy in a lot of spheres. And by the beginning of First World War, it was already a mighty power, right? So इस टाइम पे जो second half of 19th century में यहाँ पे rapid changes हो रहे थे. There were inventions with regard to synthetic dye, synthetic indigo. And by the end of the 19th century, Germany had already begun to industrially produce this synthetic indigo. So that by the First World War शुरुआत के शुरुआत होने से पहले तक ही जर्मनी का एक बहुत बड़ा मोनोपोली हो गया था. एंड द डिमांड ऑफ दिस नेचुरल इंडिगो, इट क्रैश्ड वेरी वेरी माइटिली आफ्टर दिस टाइम. सो ऑलरेडी जो चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उन्होंने ऑलरेडी जो नेचुरल एक इंडिगो प्लांट है, इसका डिमांड को ऑलरेडी बिल्कुल एक डेवस्टेट कर दिया था. सो दिस वाज एक्चुअली द रियल रीजन व्हाई दिस इंडिगो plantation business in India, it crashed, it got wiped out from not only Bengal but other parts also. In fact, एक बिहार में भी चंपारण सत्याग्रह is also related to indigo, but वो भी एक remnant जो होता है बचा खुचा वो था. Otherwise you see by and large there is not very much demand for natural indigo, or synthetic indigo is making deep inroads into various parts of the world. अभी तक कोई क्वेश्चन सो फार? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, okay, so let's see what is the significance of this. Revolt was a success despite its brutal quelling by the government. Government did come down on it, but it repressed it. But you see, it was a success. Why? Because there was ultimately the ending of this vicious and exploitative system over here. बंद कर दिया सिस्टम को. इंडिगो कल्टीवेशन है वो वाइप आउट हो गया, एज वी हैव जस्ट सीन. सो व्हाट इट मींस दैट इट वाज अ सक्सेस, इट वाज नॉट अ फेलियर, बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल. peasants, this is one of the first times that peasants are learning to fight for their rights legally, and we will see how this confidence of the peasant which they gained after this Indigo revolt, that reflected in the पबना अपराइजिंग जो 1870s में हुई थी, वहां पे किस तरीके से इन्होंने जो लीगल मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया. एंड इट वाज अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जो इस टाइम पे इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंस था वो वहां पे यूज किया बंगाल की पेजेंट्री में. देन वी हैव द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. एकता में ही शक्ति है, एंड दिस वाज विटनेस्ड माइटिली एंड कोपियसली ड्यूरिंग दिस टाइम. हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, और
ब्रिटिश को भी पता था कि सब लोग यूनाइटेड हैं, हिंदू मुस्लिम्स हैं, इंटेलिजेंसिया, क्रिश्चियन मिशनरी, एवरीबडी इज एक्चुअली फर्मली बिहाइंड द पेजेंट्स, एंड दिस हैपेंड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई इवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे बकल्ड. अदरवाइज आपस में ही टेंशंस होते हैं, जब आपस में ही डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, naturally you know that the purpose gets defeated in the first instance, in the beginning itself. Important role played by intelligentsia and press for the first time, which we have just highlighted. We have just talked about, like the role of Shishir Kumar Ghosh, who was a Bengali journalist, then the role of Hindu Patriot, the newspaper. So like this, there was important role that was played by the intelligentsia. उन्होंने इनके कॉज को स्प्रेड किया, डिसेमिनेट किया न्यूज़पेपर्स के थ्रू, प्रेस के थ्रू, और पब्लिक ओपिनियन को एक मोबिलाइज किया. एंड यू नो दैट नील दर्पण वाज पोर्ट्रेट वेरी वेल. जो ये रिवोल्ट था 1859-60 का, इनके बेसिस पे दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण को लिखा है. ये जो कंडीशंस थी वहां पे, कितना ऑपरेसिव सिस्टम था, ये हाईलाइट किया है उस बुक में. And that book became very, very popular, especially in Europe. And it shocked the British residents in Europe and in Britain that their people in India, what actually they are up to. So it helped in exposing the British rule and in fueling the nationalism in the country. So ये एक बहुत important role play किया इस play में, नील दर्पण में. दीनबंधु मित्रा ने इनको इस चीज को लिखा है, इस प्ले को. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बिकॉज आई सी दैट सम ऑफ यू डिड नॉट आंसर करेक्टली. सो नाउ लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर इन अ पोजिशन. आई एम श्योर दैट आप लोग अभी इस पोजिशन में होंगे दैट यू वुड बी प्रॉब्ली नाउ मोर फेवरेबल पोजिशन टू हैंडल दिस क्वेश्चन. And now tell me what is the right answer to this. Let me see how many of you can answer this correctly now. Please read very carefully. We have already discussed the solution in the previous slide, if you paid attention only. All right. So what is the answer? Hurry up guys, hurry up. The same question that I asked in the beginning. Yes, the answer is B. That is, it's unprofitability in the world market because of new invention. बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यू सी दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पे, सो all the questions seem very appealing. One is the peasant resistance to the oppressive conduct of planters. So इन्होंने peasant का resistance है, united है, sounds appealing, isn't it? Then we have national leaders opposition to the cultivation of indigo. अगर आपको चंपारण सत्याग्रह के बारे में पता होगा तो उस टाइम पे गांधी जी ने इस जो सिस्टम था ऑपरेसिव सिस्टम, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट. सो प्रॉब्ली वो भी आपके दिमाग में आ सकता है. देन गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स, जो रिपोर्ट आई थी इंडिगो रिवोल्ट, सो प्रॉब्ली वो भी आपके यू सी कैलकुलेशन में फीचर कर सकती है. बट द इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई दिस इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड, बाकी जो फैक्टर्स थे ऐसा नहीं है कि जो बाकी फैक्टर्स नहीं थे, राइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, द डोमिनेंट फैक्टर by the beginning of the 20th century, it happened to be this invention of synthetic dye at a very commercial industrial scale that was done in Germany. So its unprofitability in the world market is the reason why it happened. And Kush, you are absolutely right. Of course, it is B. It is B. Shruti, it's not C, it's B only. And Ayushi Ranjan, again, you know the answer right now, right? Okay, another question quickly, and let me see how many of you can answer this. Consider the following events: Indigo Revolt, Santhal Rebellion, Deccan Riot, Mutiny of the Sepoys. Now guys, इसमें
अगर आप देखेंगे तो हमने ये सारी चीजें नहीं डिस्कस की हैं, हमने सिर्फ इंडिगो रिवोल्ट डिस्कस की है। बट अगर आप थोड़ा सा माइंड का एप्लीकेशन करेंगे, बिकॉज यू नो द टाइम पीरियड ऑफ इंडिगो रिवोल्ट, राइट, तो आपको आंसर पता चल जाएगा इसको। यू विल हैव दिस very informed guesswork that is easily you can do. Why? Because you know when the Sepoy mutiny happened, right? So even if let's say you don't know Santhal rebellion or Deccan riot, with the help of these two revolts you can reach the right answer. Any idea what is it? Quick answers, guys. Kush, what do you think? What is the right answer to this? All right. So let's discuss. The answer is D. So correct answer is D. That is, first is the Santhal rebellion of 1855-1856, a very widespread one, very high in intensity and magnitude. Then we have naturally the Sepoy mutiny of 1857, अगले साल ही 56 के बाद 57. Then we have the Indigo Revolt, अभी हमने पढ़ा. Because अगर आपको देखिए, you already know this 1857, right? Then you also know 1859 and 1860. So इस ड्यूरेशन में तो there's very highly unlikely कि दूसरा कोई रिवोल्ट हुआ हो, उसके बाद ही हुआ होगा. So if you can see that 4 और 1 पास में जहां पे लिखे हुए हैं 4 and 1 they are next to each other, then you can also go in for 2 and 3 if you don't know the right answer, if you don't know about these two revolts कब उनका डेट था. अगर आपको एक का भी पता है, so it becomes very easy. So Santhal rebellion 1856 and Deccan riot in 1875 in Maharashtra. So this is the correct option, that is D, that is 2, 4, 1 and 3. All right. Yes, so Kush got it right. Fantastic, Kush. You are doing a good job indeed. That is D. All right, so guys, if any question, you can let me know. In the meantime, you can listen to this announcement that Gradeup has brought this subscription plan for you, which will give you unlimited access to 11 plus structured live courses, 60 plus mock tests, for UPSC Civil Services as well as for EPFO exam. So अलग अलग कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लान आपको वन टाइम बाय करना है. And we have the ongoing courses also. These two are ongoing courses right now. IS 2021, a comprehensive course for GS, pre as well as mains, and a complete NCRT module for Civil Services examination. And these are the upcoming courses. So you can see so many of upcoming courses that you can access to unlimited access at no extra cost, and for free series on Gradeup app, which you can avail this opportunity that free of cost. जो ऐप है, ऐप में ग्रेडअप ऐप को इंस्टॉल करके यूपीएससी एग्जाम्स में जाइए और प्रिपेयर टैब में जो नीचे आइकन दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए एंड यू कैन हैव एक्सेस टू द अपकमिंग क्लासेस. क्या क्या शेड्यूल है? सो दिस इज लाइक द शेड्यूल ऑन द ग्रेडअप ऐप. 12, 2, 5, 8 and 9 p.m. So depending upon what you are preparing for, you can attend those lectures and classes. And please do subscribe to our UPSC Gradeup IS channel अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हो. And this is a schedule like 1 p.m, 3 p.m and 6 p.m. And also, if you liked the lecture for today, please don't forget to like this video, alright, to like this lecture. And if you have any question, as I said, I'd be happy to answer any question that you have. कुछ इसके लिए आपको इंडियन जो हिस्ट्री है, नेचुरली इट वुड रिक्वायर रिविजन. तो एक तो जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो आप और जो आपको मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज समथिंग यू नीड टू गो थ्रू. एंड जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं वो कीजिए. उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी कर ली हैं तो फिर यू कैन गो थ्रू अदर एडवांस मटेरियल ऑल्सो. बिपिन चंद्रा का
India's struggle for freedom, that is also something that you can look at. And we also have Spectrum. So Spectrum is also a good book in terms of the number of facts that are given over there, right? So you can, as for the year wise chronology को आपको देखना पड़ेगा, वो तो आपको उसको रिविजन करना पड़ेगा. So as such कोई एक magic wand तो नहीं है. So you will have to actually jot it down somewhere if you want to maintain. Otherwise, you see here there is a lot of material available also online. But अगर आप notes prepare कर सकते हैं, so that will be like much more helpful, so that you can have this opportunity of going back to those notes again and again. All right. Any other question? So with this, we are done with the lecture. If you have any other question, you can ask me. Otherwise, we'll break for the day. All right. Okay. So thank you guys. Thank you so much for attending the class. And I'll see you in another session. Have a good day. Bye-bye. Take care.